Hello and welcome back to this another segment of the Tea Time, which we are doing for $1 production and for the movie Kalisa Merey Agey. And now I have one of the leads and one of the most important character in the movie, Tia Andriani. She is a professional actor, she is a music curator, and she's also a singer. She is with us in the studio today. Let's talk to her. Hey Tia, how are you? Hi, really well, thanks for having me. Tia, before I talk about the movie and your experiences, tell us a little bit about yourself. Happily. So I'm from Halifax originally. Grew up in a family that liked to go to the theater and see lots of shows. From a young age that gave me the bug for, entertainment and singing. So after going to music school when I was 18 and did my undergrad in jazz studies, I decided that wasn't enough. I moved to New York City to study theater, where I stayed for a few years and acted there before moving back to Toronto in 2017. Great. Tia, that's a question I really wanted to ask you, okay? Not just because I have talked to other people who have acted in the movie. It's a very Southeast Asian Indian kind of movie. How come you got involved? How did you get to know about the audition? How did you end up in the audition? Tell us a little bit about that. So my full-time work is as a music curator, where I spend all week in the office 9 to 5. So I'm always looking for something to stay busy, some way to stay acting, stay creative. So I look online and I'll do any project that looks interesting, because if I were a full-time actor, I would do every work that came my way, but I have to be picky because I only have so much time. So I saw this listing, and I've never done any sort of Southeast Asian film before. Of course, they don't usually cast Caucasian characters. So I said, oh my goodness, finally, there's a role in a South Asian film, and let's do this. And also, there was something interesting about the character breakdown and what I could parse out that the film was going to be about. It caught my eye, and it seemed really, really interesting. Right. So I submitted, I got called in, and the next thing I know, I'm coming in for auditions, and then the next thing I know, I'm on set. Right. So I'm going to share my experience a little bit. This was my second project with $1 production, and even then I had to go through the audition, and I felt the audition this time, although I've worked with them before, a little more difficult than the last time. How was your audition experience? Why was it more difficult? Because the director, Veena, she was making sure that I'm not, because I worked with her, she was making sure that I'm not taking this project lightly. So she was making sure, okay, I'm ready for this project or the role I was auditioning for. How about you? How was your experience? Good. It was, to my taste, unconventional from other auditions I've attended. And all auditions are really different, be it theater or music or acting, film, shorts. But this was special, and I knew it was special right away. I showed up, first of all, just to do an in-person audition. Nowadays, since COVID is really special, you're always just, doing a pretend scene in your living room and sending in the video. But this time I was called in person, so it's already more exciting. And I arrive, and the room is just filled with people helping out. I later learned that this was our beautiful director's family and friends. But at the time I thought, wow, look at all these people involved. Look at all these people who believe in this project. Right. This is going to be something special. And then that remained true throughout every step of the process. Great. Were the expectations met during the recording and filming of the project? And then some. Okay, yes. Great. All right, so let's get to some characteristic questions without revealing much, of course. I know there's a song which is sung by Noor Jahan. She's one of the legendary singers. It's a song and a half. It's one of the famous songs. It has been coming on YouTube through Coke Studio, but bringing it back into a movie project is a unique idea. How was your experience? Do you remember the song a little bit? Yes. You're a singer. I'm going to ask you to sing it. I'm just kidding. Well, we showed up for the first day of rehearsal. I was showed the song. Yeah. And the first thing I thought was, oh my gosh, who's the singer?
she's so good. And she sounds to me, so I come from a jazz background. Yeah. She sounds to me just like Ella Fitzgerald, if Ella Fitzgerald were Pakistani. That's a comparison. Yeah, except she, of course, Ella Fitzgerald only ever really sang in English. Yeah. But the tone is just like that. And of course, the breadth of the range, like the ability of the singer was virtuosic like Ella Fitzgerald. Yeah. And my only thought, I went home that day and I Googled, has Noor Jahan and Ella Fitzgerald ever sung a duet? I was thinking that would be the best thing ever. No, they have not, and they'd never met, but it would have been something. She was an amazing singer, but that song has a lot of following. So I cannot keep myself but asking, if you are acting on a song which is not in your language, lip sync is a big task. Yeah. How was it? It was so hard. I was so scared. Yeah. So at first, before you answer, yes, I was talking to Ravina, the director. She was really impressed by her lip sync. I'm really grateful to hear that. I wanted to do right by her so much. So she showed me the song, and Kiran, one of the other actors in the film, pulled me aside and was working with me on the text. And I thought, oh, surely this will only be a 30-second clip. It'll be like a TikTok of the song. Like, I'll only have to do one verse. Right. I can handle that. Mm-hmm. And then no, it's the whole song. And I thought, oh man, this is going to be tricky. This is going to be really tricky. So what I would do is, the first thing I did was try to understand a translation of the text. Did? Yeah, because if you know what you're saying, it'll be easier to express it. Yeah. To learn the text, and also because it had to influence what we were doing physically. Right. I wanted to be performing the song well as a good actor. That's true. So I needed to know what I was saying. But learning Punjabi or Urdu at this stage in the game wasn't going to happen. Okay. No, but I mean, I saw the song video. You did? The song is released, right? It's on the existing one, not mine. No, not yours. Oh, I was going to be jealous. But in that song, I saw a little bit of choreography. You're dressing. So I gotta mention the team here. AbAlJallalStudios has done a lot of work. Ravina has done a lot of work. We'll talk about Hamza, but in detail. But how was the feeling going into a cross-cultural costume and traditional dancing? Okay. I'm gonna dish. When I was 17 years old, or 16 maybe, I went to my friend Rabia's house for a sleepover. Okay. And I'm from Halifax. At that time, it was a very homogenous place. And Rabia was my only Pakistani friend at school. And she put on Bollywood films for us. It was the first time I ever saw it. And I was like, this is so cool. I love musicals. So I was like, this is amazing. And then I thought, like, how could I ever take part in something? I could never get the opportunity to dance and sing and wear these beautiful clothes. Sure enough. Well, sure enough, it happened. You're in a movie now, which, without revealing much, you're in a movie where it's exactly kind of opposite environment. Yeah. Exactly. So that's amazing. So let me talk about your co-actors. Of course, Kiran is there, but it's recording. I'll cut this part off. I don't like Hamza. I'm just kidding. He's one of the greatest person I've met. He's a good friend, but I'm never going to tell him on his face. And don't say anything nice about him. How was working with him? It was wonderful. Why are you such a hater? No, it was wonderful actually, because you have to imagine. For any person, being on set is intimidating. Yeah. I've been on set so many times, but this was a very new project for me and very scary in many ways. Of course, I wanted to do a good job. I was not confident all the time because I was afraid of messing up the text. To have a co-star opposite you who just has this golden retriever energy and makes everything feel okay. Also, in between takes, he's helping me with the text, saying, okay, this means this, and practice this line again. Made you feel really comfortable. Oh, it was such a help, yeah. Wouldn't have traded him for the Going world. back to audition, although I worked in a movie with Ravina before, Hamza was actually helping me and giving me ideas how to do better in audition. Nice. So this is really genuine person. But again, we're not going to say it in front of him.
All right. Kalisa Merey Agey. That's third project of $1 production, and that's a question I'm going to ask. You have worked in a lot of different projects, working with Rubina Faisal. The seriousness and professionalism, because it might be different from where you're coming from or what you have experienced in the past. Can you tell us a little bit about that? Yeah, absolutely. When you work on films that are passion projects, right, it'll run the gamut of professionalism and less so. This one was absolutely high-end professionalism, as well as being as heartful as like a 20-year-old's, film thesis, right? Right. It was so wonderful in that regard. And of course, we had an incredible team. Walters was helping me so much with right, choreography and clothing, which was... Everyone was amazing. I was on the set too. Everyone was talking to each other like they know each other from forever. Yeah, it was amazing, right? I am going to ask you for a comment for viewers, but before that, because you have said that in the interview, are you still in contact with your friend Rabia? Because I really want her to see you doing that song. Yeah, a little bit. A little bit. She lives in Calgary now. She lives in Calgary. So far, but yeah. We'll have to do... Is she expecting, like, for you, like, did you tell her that you're actually... I don't know. I haven't really mentioned it. I'm kind of shy. But we should do a viewing out there. Yeah. Oh, Set up yeah, a screening. definitely. That's a good idea. Calgary. I can bring Rabia as my date. That's It'll amazing. be so nice. Yeah, I know you're a busy person. I won't take much of your time, but I do want really you to say something to the viewers directly. What would that message be if you were talking to the viewer directly? Do come see our film. There are, with no spoilers, twists and turns that you're not going to expect. And I hope that it impacts all viewers from any background in understanding a little bit about what it means to belong to a community and to belong to Canada. Thank you, Tia. Thank you so much. But I'm going to ask you one more question before I let you go. And I forgot I wanted to ask you. Of course, just letting you know, I'm putting you on the spot. And I'm going to cut this part out of the podcast. And I'm going to send it to all the co-workers you worked with. Name one person who was your favorite on the set. Can be Hamza. Other than Hamza. Because he was your co-star. So that's bias. You got to name someone else. It doesn't have to be an actor. One person. You think you'll always remember. I'm putting you on the spot. Sorry. Walter, okay. Yeah. I'm sure you'll be very happy to hear that. Thank you so much, Tia. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much for joining today. This was another segment of Tea Time. Stay tuned. We'll bring more. This is the special episode for $1 production and Kalisa Merey Agey. See you in a bit. में मुकीम बहुत ही टैलेंटेड राइटर और डायरेक्टर रुबीना फैसल की तीसरी फिल्म जिसका नाम है कलीसा मेरे आगे, और इस फिल्म में मुहाजिरीन के अंदर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को मौजू बनाया गया है। मैंने इसके लिए गाना जिंद वतना तो दूर गाया है और कंपोज किया है, और जो कि मेरा गाना पसंदीदा बन चुका है। और आप सब इस गाने को और हमारी फिल्म को ज़रूर देखने आएं और सपोर्ट करें और गाने को सुनिए, अपना फीडबैक दीजिए और सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। Hello and welcome back to another episode of the Tea Time. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मूवीज की जो बनाई गई हैं $1 प्रोडक्शन की तरफ से पाकिस्तानी कैनेडियन सिनेमा, जिन्होंने कनाडा में इंट्रोड्यूस करा है। और आज खास तौर पे हम बात कर रहे हैं कलीसा मेरे आगे के बारे में। और मेरे साथ स्टूडियो में एक और बहुत ही मंजे हुए अदाकार मौजूद हैं, अब्दुल्ला गौरी साहब, जो कि ना सिर्फ अदाकार हैं, टीवी होस्ट हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, फिल्म मेकिंग में इनका बड़ा किरदार है। और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अब्दुल्ला भाई, कुछ बताएंगे हमने लिटरेरी जब कहा है तो हमने आपकी वालिदा के बारे में बहुत सुना, आपके वालिद साहब के बारे में बहुत सुना, प्लीज जरा ब्रीफली उनके बारे में बताइएगा। हाँ, हल्का सा उनका तारुफ कर देता हूँ। वालिदा मेरी मरहुमा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आबदा गौरी, बड़ी मारूफ और मशहूर शायरा थीं। उनकी 9 किताबें शाया हुई हैं। गज़लें ज़्यादा कहती थीं
और बड़ी आसान बहर में उनकी शायरी होती थी, आसान लफ्ज़ों में गहरी बात कर देती थी। तो इंशाल्लाह कभी उनके उस पर भी मैं प्रोग्राम में आपको और तफसील दूंगा। मेरे अब्बा जो हैं वो भी शायर हैं, मुसन्निफ भी हैं, लिखते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 33 साल सिफारत भी की पाकिस्तान के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में थे। कई जगह उन्होंने एज एम्बेसडर सर्व किया। उनकी आखिरी कुछ पोस्टिंग्स थी कुवैत, टर्की और इराक, जहाँ पे वो एम्बेसडर रहे। तो कई पॉलिटिशियन से भी उनकी जान पहचान रही और अभी भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, लिखते भी हैं, कॉलम्स भी लिखते हैं और रेडियो और टीवी प्रोग्राम्स पे भी बहुत आप उनको देख सकते हैं। करामतुल्लाह गौरी नाम है उनका। करामतुल्लाह गौरी साहब। अब्दुल्ला भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो आपका ये जो फिल्म मेकिंग का शौक है, ये कहाँ से आ गया? ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत दोनों विरसे में मिला है मुझे। सही। हालांकि अम्मी और अब्बा दोनों वैसे तो शायरी और लिखने में ज्यादा आर्ट रिलेटेड था बैकग्राउंड। हमारे अब्बा बल्कि प्लेज में भी थोड़ा बहुत काम करते थे, लिखते भी थे। मुझे बल्कि मेरी फूफियाँ बताया करती थी कि वो उनके बच्चों को लेके, अपने भांजों को लेके अक्सर घर में ही प्लेस बनाते थे और वो आपस में बस प्रोडक्शंस होती थी। तो जाहिर है लिखने का शौक और उसको लिख कर पर्दे पे लाने का शौक विरसे में मिला है मुझे। फिर यहाँ जब मैं 20-25 साल पहले आया कनाडा, तो उस वक्त मैंने एक आध जैसे ऑडिशंस दिए छोटे मोटे। एक ज़माना था यहाँ पे छोटी फिल्में बनाई जाती थी, कुछ ड्रामा सीरियल्स भी शुरू हुए थे, इंडियन प्रोड्यूसर्स आए थे वहाँ। ऑडिशन से मुझे याद आया अब्दुल्ला भाई कि अब हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं, कलीसा मेरे आगे, मेरी वहां पे आपसे मुलाकात हुई थी ऑडिशन के दरमियान। जी तो ये ऑडिशन का जो एक्सपीरियंस था, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई गॉट एक्साइटेड। तो ये ऑडिशन का एक्सपीरियंस वो कैसा था? जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडिशन में मिलेगा वही मिला था? बिल्कुल क्योंकि मैं यहाँ काफी ऑडिशंस देता आया हूँ कई सालों से। शुरू में जो मैं बता रहा था, ऑडिशंस होते थे वो लोगों के घरों में होते थे, बड़े अनप्रोफेशनल किस्म के। और वो पहले से तय हुआ करता था कि भाई किसको लेना है। एक आध कैरेक्टर्स के ऑडिशन करके उनको ज़बरदस्ती ठूस किया जाता था। फिर मैंने गोरों की ऑडिशंस भी किए हैं जो ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं। तो जब मैं इसके कलीसा मेरे आगे के ऑडिशन पर आया, तो मुझे वही फीलिंग आई कि ये जो है बहुत प्रोफेशनल सेटअप है। यहाँ पे बाकायदा जो है एक्ट्रेस को उनके स्किल पे जज किया जा रहा है, कोई बायस नहीं है। तो ऑडिशन देके मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हालांकि मुझे उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि मुझे अगले ऑडिशन पे भी बुलाया जाएगा और पिक कर लिया जाएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जाहिर है आपसे भी मुलाकात हुई, जो बाकी एक्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात वहाँ पर। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरे ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, क्योंकि मैं होप कर रहा था मैं पहले काम कर चुका हूँ, दोबारा ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा। पर ऑफ कोर्स प्रोफेशनलिज्म तो है। प्रोफेशनलिज्म, यही मैं बात कर रहा हूँ कि हॉलीवुड में अगर आप देखें ना कि बड़े से बड़ा एक्टर जो है रॉबर्ट डेनीरो भी ऑडिशन करता है अपने रोल के लिए आज तक। तो कोई किसी किस्म का बायस या फेवरेटिज्म वहाँ होता नहीं है। तो ये सेटअप मैंने पहली बार अपने साउथ इंडियन कम्युनिटी पे यहाँ इनके रुबीना फैसल की प्रोडक्शन में देखा। अच्छा, चले मूवी की बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा था शूट का? मैं शूट का एक्सपीरियंस भी बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, एक बड़ा अहम सवाल है और ये मुझसे भी पूछा गया था और मैं आपसे भी वो पूछूंगा। रुबीना फैसल बहुत टैबू टॉपिक को टच कर चुकी हैं पिछली दोनों मूवीज में। यकीनन इस मूवी में भी टैबू टॉपिक कुछ ना कुछ होगा। आपके किरदार में क्या वो टैबू टॉपिक नजर आएगा हमें? जो आप जी बिल्कुल नजर आएगा। और मैं ज्यादा इस वक्त रिवील नहीं करना चाहूंगा कि मेरा किरदार क्या है। इतना कहूंगा कि वो पाकिस्तान में हमारे उर्दू में कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और मौलवियों की उमूमन दाढ़ी होती है। तो आप मौलवियों की, तो आप किसी मौलवी का मौलाना का किरदार है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर मौलाना चोर होता है, लेकिन अक्सर चोर मौलाना होते हैं। तो 12 बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं आप भी, टैबू टॉपिक पे टैबू स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी नहीं तो इसी से आप 2+2 कर लीजिए। अब्दुल्ला, जोक्स असाइड, एक बात तो मैं करना चाहूंगा कि हो सकता है लोग जो हैं वो बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन आप सख्त किरदार कर रहे हैं और माशाल्लाह आप एक लिटरेरी घराने से आपका ताल्लुक है, सख्त किरदार कर रहे हैं, लोग उसे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव फीडबैक भी देते हैं। तो आर यू रेडी टू टैकल दैट? अरे बिल्कुल बल्कि ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ। मैंने आज तक ऐसे बहुत छोटे मोटे रोल किए हैं, जैसे मैं बता रहा था ड्रामों में, तो वो तो हीरो के रोल होते थे या हीरो के भाई या दोस्त का। लेकिन ये जो था, मेरी अपनी जो नेचर है उसकी भी थोड़ा बहुत खिलाफ जाता है ये जो मैंने किरदार निभाया इसमें। अच्छा, नेगेटिव है, जाहिर सी बात है, नेगेटिव रोल है और उसमें कंट्रोवर्सी भी बहुत है। तो क्रिटिसिज्म के लिए तो मैं बहुत तैयार हूँ, बल्कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट
कि लोग आके उसको क्रिटिसाइज करें तो मैं उनको कैरेक्टर की क्रिटिसिज्म के लिए तैयार है या एक्टिंग पर क्रिटिसिज्म के लिए? दोनों के लिए तैयार हूँ। दोनों मैं तो चाहता, बल्कि क्रिटिसिज्म जो है ना, मैं उसको बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे लेता हूँ। आपको अगर हर वक्त पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे, तारीफें मिलती रहें, तो अक्सर जो है ना आपके कदम जो है डगमगा जाते हैं। अच्छा। होना यही चाहिए कि क्रिटिसिज्म जो हो कंस्ट्रक्टिव हो और आप उसको दिल पे ना लें। उसी तरह हर शोबे में आगे बढ़ता है इंसान। तनकीद जो होती है, तनकीद बराए इस्लाह, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अब्दुल्ला, उनके और भी किरदार हैं जिनसे मैं बात करूंगा लेकिन एक बात मैं मजाक लाइटर नोट में करना चाहता हूँ, तो क्योंकि आप मौलाना हैं तो मैं क्या आपसे यहाँ पे फतवा ले सकता हूँ? फतवा ले तो सकते हैं, लेकिन उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि आप वो कीमत भी अदा करते हैं कि मेरा फतवा भी ऐसे लेना, अगर लॉटरी से जीते हुए पैसे मिले, क्या उस पर हज किया जा सकता है? हज, हाँ अगर लोग चोरी के पैसे से कर लेते हैं हज, तो लॉटरी के तो फिर भी उसको आप 10% जो है उसमें ज़कात में दे दीजिए। जबरदस्त। अब्दुल्ला, एक आखिरी सवाल, हाँ। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपसे हम डायरेक्ट कमेंट लें कि आप व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहिए। और वो सवाल मेरा इस फिल्म हाउस के बारे में, $1 प्रोडक्शन के बारे में। बहुत सा टैलेंट दिखा होगा आपको, हाँ। लेकिन हाउ वाज द डायरेक्टर रुबीना, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं शायद ये कई दफ़ा कह भी चुका हूँ और आगे भी कहता रहूँगा कि मैं जब देखता हूँ कि कोई शख्स जो है वो प्रोजेक्ट या फिल्म इसलिए नहीं बना रहा कि लोग उसे देखें और उसकी तारीफ़ें करें, वो प्रोजेक्ट उनके दिल से करीब है यकीनन, और उसको वो पर्दे पे लाना चाह रही है। और रुबीना जी की यही खासियत, क्योंकि आपने बताया कि मैं भी छोटी मोटी फिल्में काविशें कर लेता हूँ, तो मेरा भी ये होता है कि मैं ऑडियंस के लिए नहीं लिखता। मैं अगर सब्जेक्ट मैटर मेरे दिल से करीब है तो मैं उसको पर्दे पे लाना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। और रुबीना जी जो हैं बहुत बोल्ड टॉपिक्स चुनती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भाई लोग ये सोचते हैं कि भाई बोल्ड टॉपिक चुनेंगे तो लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, वो इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि वो उनके दिल के करीब है। इट मींस समथिंग। हाँ, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। मतलब वो जो है वो टॉपिक को हाउ डू यू से इट, मेरी जो अपनी टर्मिनोलॉजी, जिसमें कहते हैं कि वो टॉपिक को जो टैबू है, जिस पे बात करना मुश्किल है, उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए वो लाना चाहती है कि एक मैसेज जाए लोगों को। बिल्कुल सही है। और जिस पैशन के साथ वो काम करती हैं, वो पैशन मुझे बहुत कम लोगों में दिखता है यहाँ पे। सही। और क्योंकि लोग हमेशा किसी ना किसी किस्म का मफाद ढूंढ रहे होते हैं अपने काम में। अब्दुल्ला, मैंने कहा था ये आखिरी सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको फंसाऊं थोड़ा सा। जी जी। जब ये शो हमारा जो है डायरेक्टर देखें, $1 प्रोडक्शन देखें, जो बाकी आपके कोलीग्स हैं वो देखें, तो वो आपको तंग करें। नेम वन पर्सन हु वाज योर फेवरेट एक्टर ऑन द सेट ऑफ कलीसा मेरे आगे। एक्टर की बात कर रहा हूँ, एक बंदे का नाम लेना। अच्छा अच्छा। और ये मैं सबको भेजना है। हाँ, फंसाना है मैंने आपको। मतलब एक्टिंग के टैलेंट पे या उनके साथ मजा आया मुझे काम करके? नहीं, मतलब आपको लगा कि आप खुद भी फिल्म मेकिंग करते हैं, तो यार दिस पर्सन कैन एक्ट। अच्छा अच्छा, मैं वैसे सोच रहा था तुम्हारा नाम ले लूंगा। मैं ज्यादा वायरल करूंगा। लेकिन नहीं, माशाल्लाह से सारे अदाकार इसमें बहुत नहीं, एक का नाम लेना, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। हाँ, एक का नाम अगर लेना हो तो मैं, हालांकि वो मेरे वो काउंटर पार्ट ही थे उसमें, मेरे छोटे मौलाना बने में, लेकिन उन्होंने एक सीन ही किया है, काफी लंबा सीन था, और मैं हालांकि वो काफी, मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, लेकिन काफी रिटेक्स हुए थे उनके, उसकी वजूहत और थी, लेकिन एज एन एक्टर वो उनके साथ मुझे काम करे मजा आया। आई वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज टैलेंट। चले, होपफुली वो जो एक्टर हैं वो भी हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। हम देखेंगे कि उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है। विद दैट अब्दुल्ला, लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स अ वेरी, एक्चुअली इट्स नॉट अ क्वेश्चन, व्हाट इज अब्दुल्ला घोरी गोइंग टू टेल द व्यूअर्स? क्या मैसेज देना चाहेंगे अब्दुल्ला घोरी हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मैं व्यूअर्स को बता दूं कि देखिए, आप जब कोई भी फिल्म देखने जाते हैं पर्दे पे, तो वो 90 मिनट की हो या 60 मिनट की हो, आप देख के घर आ जाते हैं। उसके पीछे कितनी काविशें, कितनी मेहनत होती है, उसका अंदाज़ा बहुत से लोगों को नहीं होता है। जो लोग इन्वॉल्व हैं फिल्म मेकिंग में, उन्हीं को उस चीज़ का अंदाज़ा होता है। और ख़ास करके इस प्रोजेक्ट में मैंने काफ़ी बार यहाँ काम किया हुआ है अलग अलग प्रोडक्शंस में, छोटी मोटी, लेकिन ये प्रोडक्शन एज ए प्रोडक्शन बहुत बड़ी कहानी थी, बहुत वैल्यू थी इस प्रोडक्शन में, और बहुत मेहनत की गई है हर शोबे में। मतलब रुबीना ने इसको लिखा, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, क्रू का, एक्टर्स का खून पसीना बाकायदा इसमें खर्च हुआ है। तो मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि जल्द, ये हमारी कोशिश है कि ये फिल्म जो है पर्दे पे आ जाएगी सिनेमास पे साल के आखिर तक, या उस साल ख़त्म होने से पहले। तो प्लीज़ आप वक्त निकाल के आइएगा और इसको एज अ सब्जेक्ट मैटर देखिएगा। एंटरटेनमेंट तो एक तरफ, लेकिन इसमें जो मैसेज है
उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, आप आए। नाजरीन, ये था एक और सेगमेंट टी टाइम का जो हम खास तौर पर कर रहे हैं द मूवी कलीसा मेरे आगे और $1 प्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल ब्रिंग मोर एक्टर्स विद यू वेरी शॉर्टली।